Good morning, students. How are you? I'm fine. Myself, Hobik Roy from the mathematics. I continue your mathematics teacher. So, in this lecture, we are going to solve different questions from the straight line chapter, and it is for class 11. Okay. So, from this straight line chapter, the different questions were already solved, and which were very very important for the board level exams. And I think in the last part of our last lecture, just so far I remember that a new concept was introduced and was discussed also, and that is the intercepting form of a straight line. So regarding that form, just we are going to solve some questions from the straight line chapter, which will be very much interesting and which will be very much important for the board level exams as well. Okay, so intercepting form of a straight line. Intercepting form of a straight line. Intercepting form, that means when do you understand that this form is called the intercepting form of a straight line? Whenever the formation will be looking like that, x by a plus y by b equals to 1, then this formation is the intercepting form of a straight line. Okay, and when should I use this intercepting form of a straight line? Actually just the one question will be given, is to be given. Okay, and after that you have to use the different formation of the straight lines. Okay, there are different formation of the straight lines, and I think till now that we have discussed 3 or 4 formation of the straight line, and many more formations are left till now. Okay, so after getting the questions, how can we understand that which type of formations is going to be used in that solution? How can you understand these things? Okay, how can we actually just figure out the formations of the straight lines which are going to be used in that particular solution? That is the main and the very important questions for the students as well. Okay, and many students used to be stuck. Okay, while they used to select, they used to use the formation of the straight lines or various kinds of straight lines. Okay, so don't be confused and don't be don't be scared about that. Okay, so just remember this thing, just remember, and just listen very carefully my lectures. Okay, so in my lectures everything will be discussed, and every keyword will be discussed. That means in every questions at least one keyword used to be given, by which you can understand that this formation of the straight line will be used. Okay, intercepting form ये कब यूज होता है? क्वेश्चन देख के कैसे समझ में आएगा कि मुझे इंटरसेप्टिंग फॉर्म यूज करना है? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ही कट करेगा. क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन रहेगा जिससे आपको पता चलेगा यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ही कट करेगा. तो जब ये कट करता है दैट मीन्स तब आपको दिस फॉर्मेशन विल बी यूज्ड. ओके, अच्छा, सो आफ्टर एक्चुअली दिस यूजिंग दिस फॉर्मेशन, two intersecting points will be there. And what will be the coordinate of these two intersecting points? That is the main question. According to this formation, the intersecting points on x-axis and y-axis as well, a comma 0 and 0 comma b. This is the formation actually. Whenever the straight line formation will be like that, then the intersecting point will be a comma 0 on x-axis and 0 comma b on y एक्सिस एज वेल. x एक्सिस के ऊपर a कोमा 0 होगा और y एक्सिस के ऊपर 0 कोमा b होगा. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक दिस स्ट्रेट लाइन, ओके, सो जस्ट लाइक यू कैन सी सीम्स लाइक दैट. ओके, सो देन द फॉर्मेशन, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स विल बी a comma 0, that means 5 comma 0, because the value of a is what? 5, and value of b is what? 6. So that means 0 comma 6. These are two intersecting points on x-axis and y-axis as well. Okay, so intercepting form of a straight line will be used when a straight line cuts the x-axis and y-axis respectively. Okay, so this is the first formation, and the second formation is intercepts. If this word will be used, intercepts, प्लूरल फॉर्म, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इस टाइप का कोई भी वर्ड या सेंटेंस में कोई भी स्ट्रक्चर रह गया है तब आपको यही फॉर्म यूज करना है. इंटरसेप्ट, व्हाट डज इट मीन? इंटरसेप्ट्स मींस दिस पार्ट.
ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर कितना लेंथ काटा गया है, दैट मीन्स ये लेंथ जो है उसको बोला जाता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये इंटरसेप्ट कितना होगा, बी होगा, इसलिए तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, बी है। सो ये लेंथ बी होगा और ये लेंथ ए होगा, इसलिए तो ए, 0 है। ठीक है, तो दैट मीन्स इंटरसेप्ट्स, ये वर्ड यूज होगा तब आप ये फॉर्मेशन यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मेशन इज कोऑर्डिनेट एक्सेस। व्हेनेवर दिस कोऑर्डिनेट एक्सेस वर्ड विल बी यूज्ड इन एनी क्वेश्चन, देन आई थिंक you will have to use this formation x by a plus y by b equals to 1. Very simple. Okay, so just remember this thing. Whenever just you are solving the different questions from the straight line chapters, different formations will be there and different formations will be discussed. Okay, so when just whenever just you I think you need to use the straight line formation in particular solution, then actually just remember all the formations and all the keywords. When this formation, when this formula, when this structure will be used for this particular question. Okay, so whenever that means you will confront this straight line questions in the exam, in the practice sessions. Okay, so just remember this thing, just remember the keywords and for which keywords which type of formations of the straight lines will be used, that should be remembered first. Okay, so if that means if you can remember these things, this kind of formation once, then rest of the things will be simple. Okay, so ये है इंटरसेप्टिंग, दैट मीन्स तीन कीवर्ड है, एक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को कट करेगा, फिर इंटरसेप्ट्स, देन कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये तीन वर्ड अगर यूज हो गया तो आपको इंटरसेप्टिंग फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन यूज करना है। ठीक है, जस्ट राइट ए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच कट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which cuts of an intercept, 4 on positive x-axis and 3 on negative y-axis. Okay, there is a question. So here you can see in this question intercepts word is used. Okay, so that means and intercepts on what, x-axis and y-axis, दोनों के ऊपर intercepts हैं. So that means आपको intercepting form of a straight line use करना है. तो कैसे? Let us assume, let straight line equation ऐसे लिख लो, straight line equation x by a plus y by b equals to 1. Okay, it is the equation number 1. Now according to the questions, whatever is given in the question, that should be placed here in place of a and b. A is what? X intercept. B is what? Y intercept. Okay, so here x intercept equals to intercept 4 on positive x axis, that means positive x के ऊपर, that means plus 4. x intercept यहाँ पर क्या है? plus 4. y intercept कितना है? y intercept यहाँ पर और 3 और negative y axis, that means -3. So ये होता है a का वैल्यू, ये होता है b का वैल्यू. So from 1 x by 4 plus y by -3 equals to 1. This is the required straight line equation. Now you can solve also. You can take the LCM and then after that the rest of the things can be done, no problem. But the main structure of the straight lines,
already actually just already discovered. Okay, so already just you have found. So then find the equation of the straight line which passes through the point. Find the equation of the straight line which passes through the point. Find the equation of the straight line which passes through the point. Find the equation of the straight line which passes through the point. एक पॉइंट से पास होता है, ठीक है, passes through the point 4, -2. Okay, and whose intercept on y-axis is twice of x-axis. Okay, that means here you can see passes through the point this. Up to this part, the simple calculations, actually the simple formation actually is being surfaced. Okay, and after that, and whose intercept, this intercept word is used again. So I think if this intercept word is used, then let us take equation of the straight line. ले लो, एज्यूम कर लो, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन एज्यूम कर लो. फॉर्मेशन आप लोग जानते हैं, जब इंटरसेप्ट वर्ड यूज होता है तब x by a y by b equals to 1. ये फॉर्मेशन आपको यूज करना है. इक्वेशन नंबर 1. Now according to the question, this you can see intercept on y-axis is twice of x-axis. That means x-axis के ऊपर जितना इंटरसेप्ट ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, y-axis के ऊपर उसका दुगना बनाएगा. That means twice बनाएगा. अगर x-axis के ऊपर 2 यूनिट बनाएगा तो y-axis के ऊपर 4 यूनिट बनाएगा. x-axis के ऊपर अगर 6 यूनिट बनाएगा, y-axis के ऊपर 12 यूनिट्स बनाएगा इंटरसेप्ट्स. x-axis के ऊपर अगर a यूनिट बनाएगा, y-axis के ऊपर ट्वाइस a यूनिट बनाएगा. ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं. लेट x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू a यूनिट. हम लोगों ने एज्यूम कर लिया ये. ठीक है, सो y intercept equals to twice a, because y intercept is twice of x axis. है कि नहीं? ठीक, दैट मींस ये a यूनिट होगा किसका वैल्यू, a का वैल्यू, और ये होगा b का वैल्यू. y इंटरसेप्ट मतलब ही है b, x इंटरसेप्ट मतलब a. फ्रॉम 1 x बाय a के जगह कौन सा बिठाएंगे, a ही बिठाएंगे. y के जगह ये y बाय b, b के जगह twice a equals to 1. Okay, so I think if you want to get the equation of the straight line, then at first you need to find the values of a. Without these values you can't get the straight line equations directly. Okay, so before getting the straight line equation, the final straight line equations, at first you need to solve the values of a here. So the question is, how can you find the values of a here? Okay, is there any guidelines is given? X by a plus y by twice a equals to 1. Okay, now you need to solve the equations. You need to solve the values of a here. Okay, so it is your equation number 2. So I think one link is given by which you can get the values of a here. Okay, and what is the link here? Just you can see, since straight line passing through the point, जो required line है एक पॉइंट से पास होता है, कौन सा, 4, -2. That is this line passing through this point. So if any line passing through one particular point, then what, x coordinate can be used in place of x and the y coordinate can be used in place of y. That is the main thing. That is actually this
the formation which you have, I think you have got in the junior classes also. So I think from 2 you can write कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक पॉइंट से पास होता है तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है वो लाइन का जो x और y है उसके ऊपर आप पुट कर सकते हैं. दैट मीन्स फ्रॉम टू x की जगह 4 बिठा सकते हैं, 4/a प्लस y की जगह -2 बिठा सकते हैं, -2/2a equals to 1. So now I think easily you can get the value of a here. So 2 cancel, that means 4/a plus a plus minus हो जाएगा, -1/a equals to 1. That means 3/a equals to 1. That means a equals to 3. So if you are getting a equals to 3, that means what? What is a? X intercept is 3 and y intercept is 6. So final. So equation of straight line x by a plus y by क्या था? Twice a, that means 6 equals to 1. That is the final straight line. Okay? Find the equation of the line just write the next question. Find the equation of the line find the equation of the line which cuts off intercepts on the axis whose sum is 1 and product is -6. Now you need to find the equation of the straight line which cuts off the intercepts. Here you can see intercepts word is used. That means the intercepting form of a straight line will have to be used. So intercepts word is used. That means let equation of straight line हम लोग को तो एज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, तो एज्यूम कौन सा करेंगे? x by a plus y by b equals to 1. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1. Here x इंटरसेप्ट क्या है? x इंटरसेप्ट किसको बोला जाता है? a को. ठीक है, y इंटरसेप्ट किसको बोला जाता है? मतलब y के ऊपर कितना लेंथ काटा गया. ठीक है, b इसको ये इंटरसेप्ट मतलब है किसी को काटने के बाद जो पीसेस मिलता है, जो टुकड़ा मिलता है, उस टुकड़े का लेंथ जो होता है ना वो इंटरसेप्ट होता है. मेरे इस उंगली को अगर मैं काट के तो 2 पीस मिलेगा ना. ठीक है ना. अब दोनों पीस का लेंथ जितना होगा उसको बोला जाता है इंटरसेप्ट्स, और काटना जो है उसको इंटरसेप्ट बोला जाता है. ठीक है. हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन sum of the intercept, that means a plus b equals to 1. It is your equation number 2. Product is, that means ab equals to -6. It is your equation number 3. Now you need to find the values of a and b so that you can get the final straight line equation. That is our assumption actually. Just you need to find the a and b values, and the same values should be placed here. And after that I think the final equations will be discovered. Okay. So now using these two equations, how can I find the equation? How can I find the values of a and b? Just see. A minus b whole square equals to a plus b whole square minus 4ab. That is the formula actually. Okay. So a plus b whole square means 1 square minus 4ab means just like that. That means 1 plus
24, that means 25. So a minus b whole square equals to 25. देखो 25 मतलब क्या है 5 स्क्वायर. अब बहुत सारा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, a माइनस बी इक्वल्स टू 5. ये देखो a माइनस बी रिलेटेड और एक इक्वेशन मिल गया. ओके, नाउ सॉल्विंग 2 and 4. a plus b equals to 1, a minus b equals to 5. काटेंगे, twice a equals to 6, a equals to 3 आ रहा है. तो a का वैल्यू 3 है, तो किसी भी एक इक्वेशन में बिठा दो, b का वैल्यू भी मिल जाएगा. सो from 2 or from 4, any equations can be used here. So from 2, a plus b equals to 1. So a का वैल्यू 3 मिला, b equals to 1. So b equals to minus 2. So equation of straight line x by a, y by b equals to 1. That is the final equation. Okay, that is the final straight line equation. I think according to the question, you need to get the straight line equation, and that is solved. Okay, right? Now next question. Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line. Find the equation of the straight lines which passes through the origin. Find the equation of the straight line which passes through the origin. Just write the question. Find the equation of the straight line which passes through the origin. Find the equation of the straight line which passes through the origin. And trisect the intercept of the line 3x plus 4y equals to 12 between the axis. ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है लास्ट लेक्चर में. सेम क्वेश्चन ये लास्ट लेक्चर से थोड़ा देख लेना. मैं फिर से यहां पर समझा दे रहा हूं. देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है. गिवन 3x plus 4y equals to 12. ये जो लाइन है, देखो ठीक तरह से पढ़ो क्वेश्चन को. which passes through the origin and अच्छा trisect the intercept of the line this between the coordinate axis. That means ये जो लाइन है, intercept of the line मतलब इस लाइन का. That means ये जो लाइन है वो intercepting form of a straight line में सजाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि between the coordinate axis ये बोला गया. सो अगर इस लाइन को अगर हम लोग कौन सा फॉर्म x by a plus y by b equals to 1 इस फॉर्म में सजाएंगे, तो उस साइड में तो 1 है, तो राइट साइड में अगर 1 मुझे लाना है तो पूरा इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो हम लोगों ने किया है x by 4 y by 3 equals to 1. देखो फॉर्मेशन में आ गया है. सो ऐसा एक लाइन है, ठीक है. इस लाइन का इक्वेशन है x by 4 y by 3 equals to 1. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 4,0, इस पॉइंट का 0,3. अब क्या गया क्वेश्चन में बोला गया ओरिजिन से. दैट मींस ये आपका ओरिजिन है. ओरिजिन से दो लाइन ऐसे निकला, ट्राइसेक्ट बोला गया. ट्राइसेक्ट जब होता है तब ऑब्वियसली दो लाइन ही यूजफुल होगा. यहां पर विदाउट यूजिंग दिस टू लाइन्स ए पर्टिकुलर लाइन कांट बी ट्राइसेक्टेड. ओके, दैट इज नॉट द बाइसेक्टेड concept. Trisect, that means 3 equal parts. So if you want to divide in 3 parts, then 2 lines needs to be taken. So origin से दो लाइन ऐसे निकला. निकलने के बाद
ये जो लाइन है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। आपको ये दोनों लाइंस का इक्वेशन निकालना है। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है, उस लेक्चर से ये इसका सॉल्यूशन जो है पूरा देखो। लास्ट लेक्चर का लिंक भी मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। नाउ ए स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a straight line cuts intercept from the axis. A straight line cuts intercept the sum of whose reciprocal sum of four reciprocals is a constant, so that it always passes through a fixed point. Now here I think at first a straight line equation should be assumed. Okay, so what type of equations and what type of straight line formations needs to be taken here, needs to be chosen. Here intercepts word is used, so obviously we have to choose let straight line is x by a plus y by b equals to 1. That is the required straight line. And now anyhow just we have to get this a and b values so that we can get the final equation. Straight line is this. Okay, now here intercepts are what? A and b. Intercepts तो ये है किसके ऊपर? On x axis and y axis. Okay? According to the question, ये तो इंटरसेप्ट्स हैं, है कि नहीं? अब रेसिप्रोकल्स का सम जो है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज कांस्टेंट। रेसिप्रोकल क्या है? उल्टा, फ्रैक्शन उल्टा, ठीक है। अगर 2 होता है ना, ये 2 एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। अगर 3 है 1/3 होगा, मतलब फ्रैक्शन जो है उसको रिवर्स कर दो। तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a। बी का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/b। दोनों रेसिप्रोकल का सम क्या दिया है? एक कांस्टेंट है, दैट मींस के ले सकते हो, है कि नहीं? अच्छा, सो देखो तो के को अगर मैं नीचे लाऊं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ऐसे। इसको अगर ठीक तरह से अभी लिखो, देखो तो 1/k होल बाई ए प्लस 1/k होल बाई बी इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब दोनों को, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करो, x इक्वल्स टू क्या आ रहा है? y इक्वल्स टू क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू 1/k, y इक्वल्स टू 1/k। x और y का वैल्यू मिलके क्या बनाता है? एक पॉइंट बनाता है। ओके, सो द पॉइंट इज 1/k, 1/k। अच्छा, k क्या था? एक कांस्टेंट था, शायद कांस्टेंट था ना, तो 1/k 1/k ये सब तो कांस्टेंट्स ही है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, तो कांस्टेंट पॉइंट है ना, तो ये तो फिक्स्ड पॉइंट है। सो रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ओके,
पॉइंट तो फिक्स निकला यहाँ पर, क्योंकि के हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट चूज किया था. जस्ट सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ओके, okay, now a line passes through the point 3 comma minus 2. next question लिखो. a line passes through the point 3 comma minus 2. a line passes through the point 3 comma minus 2. a line passes through the point 3 comma minus 2. Okay, find the locus of the middle point. Find the locus of the middle point. Find the locus of the middle point of the portion of the line of the portion, मतलब एक part, portion of the line which is intercepted between coordinate axis. अच्छा, यहां पर थोड़ा बहुत एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, लोकस ऑफ द पॉइंट. एंड आई थिंक इन क्लास 10 you had got this locus concept. Okay, the English medium students, you already have this local concept, I think, and the Bengali medium and this the other state board students, I think you have got this sanchar path. Okay, and I think you have got I think this word. Okay, what do you mean by this sanchar path? Sanchar मतलब क्या? संचार करना, that means what? Move करना, move, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है. तो जिस पाथ से हम लोग मूव करते हैं उसी को ही बोला जाता है संचार करना, संचार पथ. ओके, पाथ. सो इंग्लिश में बोला जाता है उसको लोकस. ओके, सो दैट मीन्स यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है. वी डोंट नो द इक्वेशन इन द क्वेश्चन. एक्चुअली दिस इक्वेशन इज नॉट गिवन. वी हैव टू assume, and the assumption is what? Just you can see, intercepted between the coordinate axes. This word is used. That means what? X by a plus y by b equals to 1. This straight line formation will have to be chosen. Okay, so let straight line x by a plus y by b equals to 1. That is the equation of the straight line. Okay, ये assume कर रहे हैं हम लोग. अब ये जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ठीक तरह से समझना. ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच इंटरसेप्टेड है, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस. दैट मींस ये जो लाइन है, ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1. और ये जो पॉइंट है हम लोग जानते हैं a कॉमा 0. ये जो पॉइंट है 0 कॉमा b. अब इस लाइन के ऊपर मिडल में एक पॉइंट है, मिडल में, ठीक मिडल में एक पॉइंट है. A line passes through the point 3 comma minus 2. Find the locus of the middle point of the portion of the straight line. That means यहां पर मिडल में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को नहीं पता. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली. ये मूव कर रहा है, राइट. ये जो मिडल पॉइंट है मूव कर रहा है. ठीक है, अब मूव करने के बाद उसका जो पाथ निकलेगा, ये पाथ क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, वो आपको निकालना है. ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला है. और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये एक पॉइंट से पास होता है. ये 3 कॉमा माइनस 2 पॉइंट से पास होता है. ये हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये जो पॉइंट है इसको हम लोग लेते हैं एच कॉमा के. आप लोग बोला सर एच कॉमा के क्यों लिया? कोई भी मूविंग पॉइंट एंड अगर कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसका कोऑर्डिनेट जो है एच कॉमा के ही लेना है ऑलवेज. एच कॉमा के देखने से क्या होता है, ये बनाया ही गया ये लोकस के लिए, दैट मीन्स मूविंग पॉइंट के लिए. एग्जामिनर को देख के पता चल जाएगा यार एच कॉमा के है, दैट मीन्स ये मूविंग पॉइंट है. दैट इज नॉट द फिक्स्ड पॉइंट, मूव कर रहा है ये पॉइंट. पाथ हम लोग नहीं जानते. आफ्टर अ लॉन्ग कैलकुलेशन विल गेट द पाथ. ओके, नाउ ये जो लाइन है,
line 1 passing through the point, एक पॉइंट से पास होता है, क्वेश्चन में दिया गया है 3, -2। सो x के जगह 3 पुट कर सकते हैं और y के जगह -2/b पुट कर सकते हैं। ये हम लोग यूज कर सकते हैं, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते हो। ठीक है, हो गया। अब नाउ सेकेंड पार्ट है, यहां पर ये जो h, k पॉइंट है, h, k पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये मिडल में लोकेटेड है। ओके, मिडल में ये जो h, k पॉइंट है वो मिडल में है। मिडल पॉइंट मतलब ये दोनों का मिडल। ओके, तो यहां पर एक काम कर दो, इसका नाम दे दो a, b और ये p। हियर p पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकालना चाहे, यहां पर क्या होगा, h इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, k इक्वल्स टू 0 प्लस b बाई 2। सो यहां पर a इक्वल्स टू ट्वाइस h और b इक्वल्स टू ट्वाइस k। b इक्वल्स टू ट्वाइस k है कि नहीं? ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में a और b के जगह ये चीज जो है बिठा सकते हैं कि नहीं? फ्रॉम इक्वेशन 2 3 by twice h plus -2 by twice k equals to 1. So 3 by h minus 2 by k equals to 2. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एलसीएम करूं 3k माइनस ट्वाइस h और इधर 2hk, तो ये जो इक्वेशन निकला यही बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है लोकस, दैट मीन्स पाथ। दैट मीन्स h के रिलेटेड एक इक्वेशन आपको मिलेगा, वही होगा द रिक्वायर्ड पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट। एंड व्हेनेवर जस्ट h के रिलेटेड क्वेश्चन, h के रिलेटेड इक्वेशंस will be solved and will be, I think, will be discovered. After that, in place of h and k, you have to replace x and y, because h and k are actually what? Actually, they are x and y. x कोऑर्डिनेट होता है h, y कोऑर्डिनेट होता है k. तो कोई भी इक्वेशन जब आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h के रख के आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन को, कैसा लगता है? तो आपको h और k के जगह x और y लिख देना है लास्ट लाइन में। तो 3k के जगह y, 3y माइनस ट्वाइस x इक्वल्स टू 2xy। सो दैट मीन्स ट्वाइस x प्लस ट्वाइस xy माइनस 3y इक्वल्स टू 0। सो ये होगा आपका रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट। रिक्वायर्ड लोकस मतलब जो रास्ता है ना, रास्ता का इक्वेशन ये मिला, रिक्वायर्ड लोकस ऑफ मिडल पॉइंट। ठीक है, ये होगा आपका रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सेम क्वेश्चन एक लिखो, ये आपका होमवर्क रहेगा। ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, ये होमवर्क क्वेश्चन लिखो, ये आप करेंगे। ओके, ए स्ट्रेट लाइन, सेम क्वेश्चन, सेम straight line passing through the point alpha comma beta, okay, and this point bisects the portion of the straight line, and this point bisects the portion of the straight line, bisect the portion of the straight line,
passes through this point. This point bisects the portion of the straight line intercepted between the axes. Intercepted between the axes. Okay, between the axes. So that the equation of the straight line is. So that the equation is x by twice alpha, y by twice beta equals to 1. ठीक है, ये कर लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस है, कर लेते हैं. अच्छा, यहां पर देखो क्वेश्चन में तो बोला गया कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो आपको पता ही चल गया होगा which type of equations should be chosen here. Intercepted between the coordinate axis. Let straight line x by a plus y by b equals to 1. So फिगर आप एक ड्रॉ करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन x by a y by b equals to 1. ये जो पॉइंट है ये a, 0 है, ये जो पॉइंट है 0, b है. इसका नाम a, इसका नाम b दे दो. अब एक पॉइंट ये है अल्फा कोमा बीटा, ये पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो पास होता है. ठीक है, और यही पॉइंट ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको बाइसेक्ट करता है. दैट मींस ये जो पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट होगा अल्फा कोमा. उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट दिया गया था, उसमें एक पॉइंट से पास हो रहा है और एच कोमा के पॉइंट, ओके, ये मिडिल पॉइंट था. और यहां पर ये जो है अल्फा कोमा बीटा से तो पास हो ही रहा है और यही अल्फा कोमा बीटा स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट भी करता है. तो थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ट्विस्ट है यहां पर. ठीक है, सो हियर अल्फा कोमा बीटा इज द मिडल पॉइंट. सो तो अगर अल्फा कोमा बीटा मिडल पॉइंट है तो देखो तो ऐसे लिख सकता है कि नहीं, मिडल पॉइंट थ्योरम यूज करके अल्फा इक्वल्स टू a plus 0 by 2. That means a equals to twice alpha. Similarly, beta equals to 0 plus b by 2. That means b equals to twice beta. लिख सकते हैं ऐसे. So from ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. From 1 x by a के जगह twice alpha, y by twice beta equals to 1. ये है ना प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था शायद. x by twice alpha plus y by twice beta equals to 1. थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया क्वेश्चन को. ठीक है, सो इन दिस लेक्चर these are all the actually the intercepting form of straight line questions. In the next lecture just again we will solve this type of questions but in the advanced level, and very important questions, and those questions actually just are solved in this lecture. Every questions are very important for the board exams. Okay, so I think you will get the common questions from these lectures also, if the actually this type of questions will come in your exams. So this type of question is very important. Okay, and most importantly this one actually just I want to share my views and I want to share something with my audience and with my subscribers as well. Okay, some of the audiences, I think 18.5 or 18.4%, okay, they are actually viewing my channel. They are actually joining my classes as well regularly, in the regular basis. Just they are joining my classes, but they are not subscribing my channel till now. Okay, so I don't know, just but if you like my lectures, if you like my videos, just I want to just tell you this thing, that please subscribe my channel, and then actually this view my lectures and this enjoy the lectures as well. Okay, and if you have any kind of doubts regarding my lecture, regarding any solutions, then you can ask me in the comment box. Okay, and thank you very much for joining my classes, and just keep supporting me and my channel as well, so that I can provide this type of videos and this type of solutions to my students as well. And thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जस्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय एंड जय हिंद.